If you look at the entire scheme in totality, there are many advantages which need to be highlighted. Number one, the domains of warfare are changing. We need younger people, more tech-savvy people in these services. Secondly, for the FOs in particular, we will benefit from being able to select the more technically qualified people for their particular job that they're going to do in future in the FOs. For the Agniveers themselves, they have got 2 or 3 options. Number one, they can compete and re-enroll in the FOs for a service that will grant them pension. Number two, in case they leave the FOs, they decide to pursue higher education, or they decide to set up an entrepreneurship, can set up some ventures on their own, or they can be assured of some jobs either in the public sector, in the government sector, or even in the private sector. You're aware that certain ministries have already made announcements giving priority to the Agniveers in jobs like in the Central Armed Police Forces, in the Assam Rifles, and so on. So the options for an Agniveer who leaves the FOs are very wide, and I think they can be assured that they will find a good opportunity for themselves after they finish their 4 years in service. The message is not only for people who want to join the armed forces, but as in whole, for the citizens of India. I think it is resorting to violence and arson is not the solution for any problem. The solution lies in understanding the situation, understanding the scheme. If they have got any doubts, there are many military stations, Air Force bases, naval bases around their localities. They can always go to them, get their doubts clarified, and be assured themselves that this scheme is going to be beneficial for them. I think what they need to do now is to get hold of the correct information, understand the scheme in its entirety. They will themselves see the advantage and the benefits of this scheme, and I'm sure this will quell all their doubts and whatever dissatisfactions they have in their mind. It's a very positive step. In fact, this is one assurance which the people who are going to leave the services after their 4-year tenure, they were waiting to see this, to get this kind of assurance. And I'm sure this announcement by the Home Minister will be followed by many other such announcements. And this will definitely assuage the issues that are being brought up by the youth. The first and foremost message I'm telling them is to accept and lead the change. It's a change for the better, it's a change for the future. And first of all, we, men and women in uniform, should be very clear as to what the change and how it is going to take us into the future. So this is what I conveyed to all of them. And I also told them to convey to all their friends and brethren in their hometowns not to resort to violence, to understand the scheme and see the benefits of the scheme. And you would be undertaking more such visits? Yes, I plan to cover almost all the sectors, all the commands of the Indian Air Force in the next 1 week or 2. ये स्कीम तो बहुत ही बढ़िया अवसर है. ये इस स्कीम की सख्त ज़रूरत है फ़ौज के लिए, क्योंकि हमारी फ़ौज और जो वॉरफेयर का नेचर है वो बदलता जा रहा है. इसके तहत हमें नए जोश, नए जज्बा और नए विचार वाले युवकों की बहुत ज़रूरत है. इस स्कीम के द्वारा बहुत लोगों को अवसर मिलेगा 4 साल सेवा में, फ़ौज में सेवा करने का, और उसके बाद जब बाहर जाएंगे तब उनको अपॉर्चुनिटीज़ 3-4 किस्म की मिलेंगे. या तो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, या तो नौकरी मिलेगी उनको, जिसके लिए फ़िलहाल ही आपने सुना होगा कि कुछ एजेंसीज़ ने एश्योरेंस दिया है कि प्राथमिकता दी जाएगी अग्निवीरों के लिए. और तीसरी बात है, अपने अपने जो सेविंग्स हैं उनके, उसकी तहत से अपना वेंचर शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं. तो उनके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी. और कुछ युवाओं को सर्विसेज में जो 25% हैं जो सेलेक्ट री एनरोल हो जाएंगे, उनको सर्विस में पेंशनेबल जॉब मिलेगा. पहला मैसेज है कि किसी भी देश में हिंसा के लिए स्थान नहीं है, और ये जो नौजवान हैं इनको पहली बात इस स्कीम के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलनी चाहिए, उनको देनी चाहिए. और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. जिस गांव में ये हिंसाएं हो रही हैं वहाँ पे नज़दीक ही कोई एयरफोर्स स्टेशन, आर्मी स्टेशन, कैंटोनमेंट या नेवल स्टेशन होगा. मैं चाहता हूँ कि वो इस मिलिट्री स्टेशंस पे जाएं और उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करें, ताकि उनके मन में कोई ऐसी आशंका ना रहे कि इस स्कीम के दौरान आगे क्या होगा. पहले तो मुझे अपने एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स को ये बताना है कि इस नए स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, और
इसके दौरान इस स्कीम से किस तरह के युवक हमारे बीच में आएंगे और उनके साथ ट्रेनिंग कैसे की जाएगी और उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ताकि यही लोग बाहर अपने गाँव में इसी के बारे में सबको जानकारी दे सकें। आपको पता है कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण भर्ती बंद हो चुकी थी। इसके कारण काफ़ी युवाओं को चांस नहीं मिला भर्ती होने के लिए। इसी कारण एक समय के लिए एज रिलैक्सेशन 23 साल के लिए दी गई है। और जो होम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। इसके कारण युवाओं को ये भी आश्वासन मिलेगा कि 4 साल सेवा करने के बाद उनके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या असम राइफल्स या किसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होने के चांसेस और भी बढ़े हैं। सर, ANI से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।